Hey rational folks, welcome once again to my channel. I hope you're having a great new year. Have you managed to win the lottery yet? No. What about closing off your long-standing home loans and EMIs? No. Is your newspaper wala dropping you wads of notes along with your daily newspaper? What? No? Then how can you call this a happy new year? Fret not, I am here to solve all of that today. This episode is all about and only about how you can make money. Not just any money, plenty money. And I mean plenty money. You can get enough money to buy Antilla, then buy Tesla and buy X and change its name back to Twitter. Just imagine your garage filled with a Lamborghini, Porsche for you and your wife, and a Mercedes for your maid. That is, if you have enough space in your garage after keeping all that cash that the universe is going to throw at you. Imagine you having so much money that you can have your own GDP. And that is why I have got some experts in for today's show all the way from Instagram University. And they're all here just to make you super duper rich. And you don't need to work 70 hours a week sacrificing your weekends. How about that? Okay, you think I'm pulling your leg, right? Actually, I'm not. Welcome to the first episode of Let's Not Get Fooled, where we take a deep dive into the absurdities that make us wonder. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Yes, it's a new year and the start of a new series called Let's Not Get Fooled, where I will bring out so much absurdities and pseudoscience that will make your head spin. Hello, I'm Anand and you're watching Pale Blue Thoughts, the channel which debunks pseudoscience and irrational faith-based positions. If you are new here, please consider to subscribe, and if you are a regular viewer, please consider to support via super thanks or by becoming a member so that I can continue to bring interesting content for you. Please, I really do need your support. If you can't afford it, don't worry. I'm giving you loads of money-making techniques in this video. As a token of gratitude, you could share some of that back with me, can't you? Also, please consider sharing this video so that it reaches many more people. Okay, so today we are going to be talking about Instagram's latest scam trends. No, it is not just filters that make you look like a Greek god. It is podcasters promoting wealth-attracting hacks. Need money? Write your name on a bay leaf with a green pen. Broke? Chant a mantra and wait for the universe to G-pay you. Who needs hard work when you have hacks like these? So, what are you waiting for? It is time to get rich, baby, filthy rich. YouTube video begin now. YouTube video begin now. YouTube video begin now. Recently, I came across a read on social media where a lady was sitting on a podcast and handing out methods for getting rich. And here I was, a poor YouTuber who is doing this full time to educate my countrymen to be rational and logical and scientifically inclined, but struggling to reach even 10,000 subscribers. So naturally, my ears perked up. If I can get rich, then I don't need to ask my viewers for money to support my work, right? And I can engage full-time editors, which would make my job a lot easier and can get you more content. And so my greed took over and I clicked. And the algorithm spotted my greed, and voila, my Insta feed was soon filled with various people hell-bent upon making me rich. That is when I realized what Indian podcasting was all about. Sit in front of a microphone and talk through your behinds. Just talk about Mars and Shukra and Shani and Jupiter, but using Uranus. See for yourself as here comes the first expert. छोटी सी रेमेडी है, सारे लोन्स खत्म. आपने ना माचिस की डिब्बी लेनी है. ठीक है. माचिस की डिब्बी लेके चुपचाप जाना है, मंदिर में रख के आना है मंगलवार वाले दिन मॉर्निंग में. पीछे मुड़ के नहीं देखना जब आप घर वापस आओगे. अच्छा. हो सकता है आपको पीछे से काफी लोग आवाज मारेंगे, बट आपको पीछे मुड़ना नहीं है. ये कर लो आप 7 मंगलवार, सारे लोन्स खत्म. See, I told you getting rich and finishing off your loan is super easy. Now, if this worked, Vijay Mallya would have been a free man just by dropping matchboxes at Tirupati. I thought there was no match for this one, but oh boy, there is more.
चाहिए। जब फीमेल पैर 5 मिनट ही सही, अगर आप अपने हस्बैंड के 41 डेज तक रोज पैर दबाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास पैसा ना आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसके पास आएगा? लड़की के पास? लड़की के पास आएगा, मेल्स के पास नहीं आएगा, फीमेल्स के पास आएगा। Ah, yes, because clearly the stock market rises and falls based on foot massages. No wonder our economy's biggest problem is inflation. Wives are too busy massaging instead of questioning this nonsense. So I thought there must be some other way to get rich without making your wife your masseuse. And the universe manifested this. If you want your wife to get a lot of money so that she doesn't ask for alimony, make a beeline for Maybelline or Lakme salon. Thank me later. अब जिस फीमेल को देख लेंगे अगर वो मेकअप पे इन्वेस्ट करती है ना, वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है। तो जितने भी मेल्स मुझे सुन पा रहे हैं अभी, वो अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को पैसे दें कि हाँ जाओ और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद के लाओ। I mean, prosperity from makeup? Is this financial advice or a Nykaa sales pitch? So basically, Lakshmi now comes packaged with kajal and lip gloss. Ambani uncle, you're diversifying in all the wrong places. If the previous advice made your wife smile, then here is a financial advice that would make any woman flap her hands and fly. Take her out for shopping and watch your money grow. You don't believe me? वाइफ को हमेशा बोले कि सज के सुंदर बन के रहें। जितना बीवी श्रृंगार करेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। अच्छा, आप उसको जितना खरीदवाएंगे, जितना शॉपिंग पे लेके जाएंगे, जितना उसको बोलेंगे अपने ऊपर उड़ाओ, ऐश करो, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। कहते हैं हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ। तो वाइफ को जब तक खुश नहीं रखोगे तब तक पैसा नहीं आएगा। Ah, so all those guys camping outside Zara stores are secretly future billionaires. They're not waiting for their wives. They're actually securing their spot on the Forbes list. Smart. All you husbands out there, how many of you are rich because you took your wife out for shopping? Raise your hands. Sorry, comment and let me know. As for myself, I need to apply for another loan to pay off my credit card bills from Nykaa and Lulu Mall. Harry, what am I saying? Why am I talking about loans when I have experts telling me how to mint money? Here is one. बहुत सारी रील्स वायरल हुई है कि अपनी वाइफ के फोरहेड पे किस करके जो मर्द जाएगा घर से बाहर, उसका काम 100% होगा। Gosh, if forehead kisses guaranteed success, half of Bollywood's romantic heroes would be CEOs by now. वाइस वर्सा, जो भी स्त्री अपने हस्बैंड के मनपसंद खाने को बनाती है, उसका शुक्र अच्छा होगा। दिल का रास्ता पेट से होके जितने भी उसको अपना शुक्र अच्छा करना है, वो इस चीज को जान ले कि जब आप अपने हस्बैंड की चीजों को ध्यान रखेंगे कि क्या अच्छा है क्या नहीं होंगे, तो उनको क्या चीज पसंद है, तो आप अपना शुक्र एक्टिवेट कर रहे हैं। So enhance your Venus through cooking. Looks like even planets run on ghar ka khana. Madam, if this worked, every Punjabi wife serving butter chicken would have a Swiss bank account by now. And by the same logic, every dosa making wife in South India would be a millionaire by now, including mine. And what about bachelors? Are they doomed to stay broke because no one is feeding them rajma chawal with cosmic intentions? By the way, I'm hoping Nirmala Sitharaman is not seeing this video. She might just launch a new GST slab just for me, just because I'm sharing so much wealth information. Anyways, let's hear more money making tips, shall we? Let us listen to this Mahashay now. आज का जो उपाय है उन सब भक्तों के लिए जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी सर पे बहुत कर्जा हो गया है, इसको उतारना है, कैसे भी करके उतारना है। एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ, ये महा उपाय करोगे गारंटेड उस कर्जे से मुक्ति पाने के रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है, शमशान घाट जाना है, प्रत्येक शनिवार आपने ये कार्य करना है। एक लोटा शमशान घाट के कुएं से जल लेना है और पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। कैसे भी प्रकार का कर्जा होगा उतरेगा ही उतरेगा, उतरेगा ही उतरेगा। Uh-oh. He wants you to visit a cemetery on Saturday and take a lot of water from the well in the cemetery and pour it on a sacred fig tree. View at discretion. If you're planning to visit a cemetery at night, please remember, I am not responsible if you trip over a gravestone or encounter a friendly or not so friendly spirit. Be careful or else you will have a lot of explanation to do if you get caught by the police. And हो सकता है आपको पीछे से काफी लोग आवाज मारेंगे, बट आपको पीछे मुड़ना नहीं है। okay, let's see if there's a better way to earn money now. Let us hear what this lady has to say. आपने रोज कर क्या करना है, 10 मिनट अपने कानों को ऐसे ऐसे करके पूरा प्रेस करना है। आपकी लाइफ पलटती हुई नजर आ जाएगी 15वें दिन। जीवन में अपॉर्चुनिटी, लोग आपसे मिलने लग जाएंगे। Well, that was easier, wasn't it? Pressing your ear 10 times a day for 15 days to attract wealth. Madam, if this worked, every toddler pulling their ears in frustration would be millionaires by now. Imagine
Ambani is sitting in Antilla, pressing his ears like he's tuning into Radio Mirchi. If you're a 90s kid, think why aren't you a billionaire when your teacher used to do the same thing for not doing your homework in school? But this method wasn't hard, right? The only downside is that you'd be looking like Rudolph with red ears instead of a red nose. Right, let's see another way to become rich using Shukra, Venus. शुक्र आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है। अपने शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए हर रोज अपने शुक्र पर्वत पर इत्र लगाइए। आपका शुक्र आपको छप्पड़ फाड़ के पैसे देगा। वीनस माउंट हमारे हाथ में ये होता है और तो ये जो है यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी का साइन बना लेंगे ना ग्रीन कलर के स्केच पेन से और इत्र लगा लेंगे, परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र लगाना है और उसको रब करते हुए ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। ये लक्ष्मी जी का बहुत छोटा सा मंत्र है। इसको अगर चैंट करके और इस तरीके से रब करेंगे 24 टाइम्स अगर आप कर लेंगे इन्फिनिटी के साइन बनाकर, विद इन 43 डेज अगर आप ये कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फ्राइडे, तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि इतना पैसा आ जाएगा और ऐसी जगहों से आएगा ना कि आप जहां से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। भाई, if perfume on your hand could attract wealth, every deodorant ad would end with सब कुछ तो उड़ गया लेकिन पैसे रह गया. Imagine Elon Musk dubbing Musk on his palm before every business deal. And why stop at the Venus Mount? Rub it on your wallet, your cupboard, and on your landlord. Maybe they will magically reduce your rent. Let us face it, wealth doesn't come from perfume palms. It comes from using those palms to actually work. Okay, let's move on to something more interesting. South Mumbai, South Delhi, South Kensington in London or Southern California. Why so much wealth in the South only? South direction actually represents fire, energy and prosperity as a universal law of attraction for wealth. In the South direction of the house, you just need to place a simple red color cloth, write your affirmation on it, write your wish on it and just place it or hang it in the South direction of your house, and anybody and everybody can do it who wants to improve their wealth and prosperity. After you do this, you will definitely see and notice the increase and improvement of wealth and prosperity in your house. So South Kensington, South Mumbai, South Delhi are expensive because South is good as per Vastu. Madam, by that logic, South Indian food should be priced like caviar. So what about South Korea? And are people in South Africa so rich that they are handing out diamonds like prasad? By that logic, South America should have been the economic powerhouse of the world instead of North America, right? If Vastu made South so magical, then South Pole would become prime real estate and penguins would be renting their igloos as Oyo rooms. And oh madam, have you read the current news? Vastu strikes again. Now let us listen to another lady who talks about directions. वास्तु के हिसाब से नॉर्थ का डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन है जो आपको बेइंतहा पैसा देता है, बहुत पैसा देता है और बहुत लोग बोलते हैं आपको नॉर्थ के डायरेक्शन में एक फाउंटेन लगाना चाहिए, दैट इज रनिंग वाटर. What? One says south and one says north. Can you please both come to a conclusion, please? इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ में फिश एक्वेरियम रखते हो, इसके दो फायदे हैं. एक तो फाउंटेन हो ही गया, दूसरी चीज है आप रोज उन मछलियों को खाना दोगे जिससे आपका केतु बहुत अच्छा हो जाएगा. केतु इज द प्लैनेट विच इज रेगुलेटिंग योर कर्मास फ्रॉम द पास्ट लाइफ एंड मछलियों को खाना देना राहु और केतु इनफैक्ट दोनों का ही सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है. सो ट्राई इट आउट, अपने घर में फिश एक्वेरियम रखो इन द नॉर्थ साइड एंड यू सी द मैजिक इट विल ब्रिंग इन योर लाइफ एंड हाउ मच मनी इट ब्रिंग्स इन योर लाइफ. So feeding fish fixes your past life karma. Great. Now goldfish are officially more powerful than therapists and astrologers combined. What is next? Not keeping water by the bedside because it affects sleep and causes diseases. बेड साइड पे हम आपने 90% लोगों के घर में देखा है बेड साइड पे हम पानी रख के सोते हैं, है ना. वाटर बॉटल रख लेंगे, कोई मग रख लेगा, ग्लास रख लेगा, वो रखना ही नहीं चाहिए. वो आपकी नींद को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है और आपको जिन घरों में पानी जो साइड में रख के सोते हैं पीने का पानी, उसको देखेंगे कि बीमारियां बहुत जल्दी होने शुरू हो जाती हैं. Madam, are you seriously saying that water, something that we really need to survive, is plotting against us while we are asleep? If water bottles could cause diseases, every office worker with a desk bottle would be in ICU. Let us give water a break. Let's keep moving on. Now, let us get into our kitchen. You can watch the rest of the video from there. Why? Because the kitchen is where all the money making actually happens. It is the actual Reserve Bank of India. Don't believe me? Here I go. अपने किचन में जाएं और नमक का डिब्बा चेक करें. नमक का डिब्बा जो है प्लास्टिक का ना हो, गंदा ना हो, पुराना ना हो, उसको कांच के डिब्बे में कन्वर्ट करें. आपका नमक फुल होना चाहिए. जब भी नमक निकालते हैं उसको फुल कर लें, हमेशा उसमें नमक भर के रखें. जितना नमक का डिब्बा भरा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, घर में पैसे के ब्लॉकेजेस उतने ही कम रहेंगे. If financial success depends on salt,
Dandi March wasn't about freedom. It was a secret wealth hack that Gandhi forgot to tell us. Imagine banks offering loans based on your salt levels. Forget FDs, invest in sodium. I'm just surprised nobody's asked for a salt exchange board of India yet. And again, hope Numerology doesn't watch this video. I don't want to give her any new ideas. I have stopped eating popcorn these days, and we don't have anyone with the surname of Gandhi who is capable of walking to Dundee and protesting against the salt tax. So let us move on. Now there are more tricks with bay leaves, but you need to get yourself a green pen for this magic. छोटी सी रेमेडी बता देती हूँ जो सब लोग कर सकेंगे और उसमें धर्म का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं आता। बे लीव लेना है, ठीक है, उसपे 6 नंबर लिखना है ग्रीन कलर के पेन से और अपनी विश लिख दी जो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए कि मुझे ये गाड़ी मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखना है और उसको जला देना है। जब आप उसकी ऐश को देखेंगे कि जल चुकी है, उसको आपने किसी भी पेड़ पौधों में या यूनिवर्स को अपने दे देना है, पानी में भी बहा सकते हैं। ये 43 डेज तक कर लीजिए सर। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे की बारिश और तरक्की। और क्या होना चाहिए कि एक बे लीव ले सकते हो, उसके ऊपर आपने 24 लिख देना है, ग्रीन कलर के पेन से 24 लिख देना है और उसके ऊपर इत्र लगा देना है, उसको अपने वॉलेट में रखना शुरू करें। सिर्फ इतना करने से पैसे की बारिश आपके घर में होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको ना इंस्टेंट मनी चाहिए होती है, कई बार कुछ ऐसा चीज खरीदनी है, कुछ ऐसी चीज हो गई है घर में कि उनको पैसे की जरूरत पड़ गई है, लोन ना लेने हो और हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए, तो एक बे लीव लेना है, उस पर जो है ग्रीन कलर के पेन से अपनी चीज लिख देनी है। उसमें क्या चीज लिखेंगे कि मनी लिखो, मनी, उसके सामने 2 लाख लिख दिया, उसके ऊपर सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, एक चुटकी छिड़क, ठीक है, उससे एक लौंग फूल वाली उसके अंदर सेट कर दिया, ऐसे लगा दिया है ना, वो लगा के आपने जो है एक कैंडल जलाई, एक दिया जलाया, उसके सामने जला दिया उसको, जो उसकी ऐश बची ना इसको यूनिवर्स को ही ब्लो आउट कर देना और इससे 100% पैसा आता है, 100% 200% पैसा आता है। I tried this, but all I got was a green stained hand, a burned bay leaf, and a lecture from my wife for wasting her masala supplies. Seriously, if bay leaves had such magical powers, India's spice industry would have overtaken Silicon Valley by now. And let us not forget the logistics. Do you know how hard it is to find a green pen these days? I went to 3 stationery shops and the shopkeeper looked at me like I'd asked for a time machine. Finally, I found one, wrote my wish, and nothing. Not even a 10 rupee note appeared out of thin air. Maybe I should have used organic bay leaves. Who knows? And honestly, why is it always bay leaves? What did curry leaves do to deserve this discrimination? Right? Hashtag curry leaves matter in the comment section to show your support. A true Malayali cannot stand discrimination against curry leaves. Mind it. Okay, ready for the next one? Also keep a tea bag and sugar and make masala tea anywhere you want. Ready for one more? इफ यू वांट कि आप बहुत ज्यादा लकी हो जाओ, एक इंडियन स्पाइस आता है, उसका नाम है स्टार एनीस। आपको वो लेना है और आपका कोई भी लाइफ का इवेंट है या जॉब के इंटरव्यू के लिए, किसी भी चीज के लिए, वीजा के लिए बाहर जा रहे हो, आप उस स्टार एनीस को लो अपने हाथ में, उस पर अपनी विश पढ़ दो और फिर उसको अपने साथ लेकर जाओ और वो काम करो। देखना 100% आपका काम बनेगा। ये बहुत अच्छी टिप है बिकॉज वो स्टार जो होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है और आपकी विशेस को फुलफिल कर सकता है। So now, star anise isn't just a spice, it is a VIP pass for visas and promotions. Forget consultants, just hand over your masala box to your embassy officer. Imagine the visa officer's face when you pull out a star anise instead of a passport. They will stamp your application just to get rid of you. 2025 आ गया है और सभी राशि वालों के लिए कॉमन उपाय है 2025 में जनवरी से दिसंबर तक सबको 2 डेली मुनक्का खाना है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे साल आप बहुत सी समस्याओं से बचेंगे। हरि ओम। Who needs a balanced diet or hard work when 2 kismis are all it takes to hit jackpot? Imagine failing at something this year and being told, didn't eat your kismis? That is why. Sounds like an anti-conspiracy to empty dry fruit jars faster. आप फ्रिज खोलोगे उनका तो 10-10 दिन की मिठाइयां पड़ी रहेंगी, खराब क्यों हुई खराब। वो मिठाई जब अंदर से आवाज देगी मैं खराब हो गई हूं, निकाल मुझे रसोई फ्रिज से बाहर, तब वो बाहर निकलती है। What is fridge? Fridge is wrong. Ah, no wonder. When I opened my fridge yesterday, I heard a scream saying, "Get me out of here." It must be that plum cake my friend gifted me for Christmas. I totally forgot about it. According to Vastu wisdom, stale food in the fridge is the root cause of all your life's problems. Who knew that the samosa you saved for later was responsible for your nosy relatives, bad Wi-Fi, and India losing in cricket
in Australia. Honestly, if stale food were this dangerous, every Indian fridge would be a ticking time bomb. Look, cleaning your fridge is a great idea, but blaming leftover dal for why your boss hates you, that is giving dal too much credit. अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूं, जिसको करने के बाद आप कोई भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में आपको फिटकरी, कपूर और लौंग ले लेना है। जिस भी किताब को आपको पढ़ना है उस किताब पर 7 बार आपको घुमा देना है। ये जो घेरा आप बना रहे हो, ये घेरा एक कवच का निर्माण करेंगे। इस कवच के बीच में जब आप किताब के पन्नों को पलटोगे, जितने भी पन्ने पलट रहे हो वो सारी चीजें आपके दिमाग में चली जाएंगी। और जब अब आप पेपर दे रहे होगे तो उस समय जो भी चीजें प्रश्न पूछे गए होंगे, अगर इस किताब में उसका उत्तर है तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में आ जाएगा और आप उत्तर आसानी से लिखकर पास हो जाओगे। शायद कुछ लोगों को ये मेरी बात ढोंग लगे, और लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य है और ये काम करता है, कईयों के ऊपर काम करा है। आप एक बार करके देखिए, कोई भी आपको मना करे मानिए मत, मेरी बात मानिए, एक बार करके देखिए, आपको फल मिलेगा और अवश्य मिलेगा। बस एक बार करके देखिए, अगर रिजल्ट ना मिले गाली देकर जाना, अगर रिजल्ट ना मिले गाली देकर जाना। Oh wow! If this worked, toppers would carry spice racks instead of notebooks. And instead of passing chits, they would be passing spices. No need to memorize physics equations and hard to crack math equations. Just open a kirana store and graduate with honors. मैं आपके साथ शर्त लगा सकती हूँ, ये जो मैं आज एक रिचुअल बताने जा रही हूँ, अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आप जो भी चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। एक गिलास आपने पानी लेना है, पानी लेने के बाद आपने उसमें ऐड करना है पानी में खाने वाला नमक। 3 चम्मच आपने खाने वाला नमक ऐड करना है। 3 चम्मच आपने ऐड करने के बाद पानी को घोल लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने एक व्हाइट पेपर लेना है, व्हाइट पेपर पे आपने अपना नाम लिखना है, आपने अपनी इंटेंशन लिखनी है। आप कुछ भी इंटेंशन लिख सकते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पैसा चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको बच्चा चाहिए, जो भी चाहिए, आपने वो पेपर पे रेड इंक पेन से या बॉल पेन से लिखना है। उसके बाद आपने पेपर को कर देना है फोल्ड। ये फोल्ड करने के बाद आपने वो पेपर को पानी में इमर्स कर देना है और आपने ये पानी को 1 हफ्ते तक संभाल के रखना है। उसके बाद आपने ये पेपर को डिस्कार्ड कर देना है, थ्रो कर देना है और पानी को प्लांट्स में डाल देना है। आपकी विश 100% पूरी होगी। करिए ट्राई। Okay, so let's write India wins the 2025 World Test Cricket Championship on paper. Dunk it in salt water and wait. In fact, I have a better idea. Instead of the paper, just squeeze a lemon, pop in some ice cubes and enjoy some cool lemonade. At least it would feel refreshing. I'm just flabbergasted at the way people make reels on Instagram and how they get millions of views and likes. Is India this stupid? You tell me. Anyways, we have more weird things to do. Let us head to another room of the house, shall we? लोग बहुत डरते हैं राहु और शनि से। एक रेमेडी दे दूं, वेडनेसडे और सैटरडे को जी घर की टॉयलेट क्लीन कर दिया। जिसको भी राहु या शनि परेशान कर रहे हैं, या वैसे ही अगर किसी को बुरा वक्त चल रहा है ना, तो अपने घर की टॉयलेट क्लीन करने लग जाओ सैटरडे को और वेडनेसडे को। 4 सैटरडे ही हुए ना, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। इतनी तगड़ी रेमेडी है। So basically, Shani Dev is our Indian Swachh Bharat ambassador now. Modi ji builds toilets, we clean them, and Shani Dev gives his blessings. Oh, wow. Imagine explaining this to your boss. Sir, I will work from home on Wednesdays because Rahu needs my toilet cleaning seva. I mean, Shani Dev must be the only god who's like, forget gold or coconuts. Just show me a clean loo and I'm happy. To be honest, this sounds like a desperate attempt by toilet cleaner brands to boost sales. Buy Harpic, clean toilets and get rich. At this rate, the people who clean the Sulabh Shauchalayas and railway toilets will be topping the Forbes list of richest people. Okay, let's try some bigger fish now, shall we? When it comes to podcasts, how can I forget Ranveer Allahabadiya, also known as Beer Biceps? He promotes pseudoscience in a mighty big way. Income increasing. वास्तु। If you are into a job, तो आपको 2 डायरेक्शंस मेन देखनी है, one is north and one is south east. इन दोनों में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के हैं तो तोड़ना नहीं है। नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप लेके टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगा देनी है और साउथ ईस्ट में रेड कलर की टेप लगा देनी है। इतना करोगे तो आप ये समझ लो कि आपके जीवन में पैसा जरूर आएगा। If blue and red tape can fix Vastu, why not just sell Vastu colored toilet seats instead of giving this bizarre advice? And how do you explain this to guests? And this is from India's most popular podcast. And even he doesn't question the guy. But I'm sure he too feels, ye maine kisko utha ke leke aaya? Just look at his expressions. But hey, this will get views. Lots of views. And money would flow in without taping his own toilet. What an idea, sir ji. पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मान लो सर में दर्द हो रहा है, वाइफ को बोलो ले भाई यहाँ 5-8 लिख दे बस। बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं, बट लिखना सिर्फ ग्रीन पेन से है, ये ध्यान रखना है बस। If this worked,
pharmacies would be out of business, and stationery shops would sell magic green pens as painkillers. By this logic, doctors should replace prescriptions with number 58 stickers. Take 2 stickers daily and call me in the morning. And then you go back to him and say, "Doctor, my migraine didn't go away because I used the blue pen instead of green." Now, what if you accidentally write 85 instead? Does the pain multiply or just move to another different part of your body? If writing numbers could heal, why stop at 58? Let us scribble pi for infinite health. Just listen to this madam now. Is I'm going to give you a medicine, and this medicine is made up of words, Right. and they work within seconds. They're the fastest medicine in the world. On the mouth of the glass, you're going to say 3 times, "Yes, I am healthier and wealthier now." And because mine is a glass, I'm just going to swirl it. It's just going to turn the bottle in. This is to make sure that every cell is carrying this instruction. We have just at home made refined alkaline water. Wow! Just whisper some words and you can change the pH of water. This is worse than water memory and even homeopathy. By the way, alkaline water does not have any known health benefits. Please check out my video on this topic in case you have missed it out. आप जो नोट की गद्दी बन गई उसके ऊपर ये नंबर लिख के रख दो, 221122, ठीक है? उसके नीचे से आपको नोट नहीं निकालने पड़ेंगे जीवन में, ऊपर से आते जाएंगे. Well, let me tell you a story. I had a millionaire friend who was told by his Vastu consultant to write the numbers 081116 on all his bags of notes some years ago. He did, and when I met him the next day, I found him crying and cleaning his bathroom. Would you know why did he do that? If you know the reason, please comment and let me know. Special prizes for all those who get this joke. Sponsored by Rahu and Ketu. तो सोचिए आपका इंटरव्यू है, आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, आप फिर लड़कियां रात में आजकल अटक जाती हैं, लेट नाइट, ओला नहीं मिल रही है, बसेस नहीं मिल रही है, कोई भी चीज, घर में बहुत लड़ाई चल रही है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको एकदम से शांत करनी है, सामान गुम हो गया, घड़ियां गुम हो रही हैं, डायमंड्स गुम हो रहे हैं, कुछ भी गुम हो गया, हर एक इंस्टेंट सिर्फ एक ही मैजिक वर्ड है, इसका नाम है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो 100% आपको कोई भी चीज इंस्टेंट में चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ 3-4 बार बोल दीजिए, आपको 100% डिफरेंस दिखेगा। अब डिफरेंस सिर्फ एक ही टाइम नहीं दिखता है इंसान को, जब आपके लिए वो किस्मत में ना हो। Imagine screaming wolf magic at 1 a.m. to find an Uber. The only magic you will experience is the driver cancelling your ride faster than ever. Now, when you're having an argument in the house, just shout wolf magic mid-argument. Either everyone will burst out laughing or check you into a mental wellness retreat. Either way, peace restored. If wolf magic begin now guarantees success, why hasn't this lady been hired by the Indian cricket team to chant it every time they are chasing 300 plus scores? And did you see the subtle way she covered her tracks by saying the only time it doesn't work is if it is not in their destiny? This is the trick that every astrologer or numerologist or Vastu consultant uses. Blame it on your destiny if their prediction fails. Just like a cat, they will always fall on 4 legs. I mean, I'm fed up with all this. Aren't you? India sucks. Indians suck. Let me try and go abroad and live somewhere better. But I'm not able to do it. Can you help me, madam? 2128 आपकी वॉच के पीछे लिखिए और ऐसा लिखने से आपके अब्रॉड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे. Do try this remedy, it really works. Never mind. I will just wither away my life here amidst all this nonsense. So the next time someone tells you to chant mantras or write on leaves, ask them this. If it works so well, why are they not on the Forbes list? Stop falling for these scams. Educate yourself. Focus on real solutions. And remember, success comes from hard work, not from bay leaves and green pens or cleaning toilets. The reason for today's long video was to expose a growing menace. Podcasters giving their mics to astrologers, numerologists, Vastu consultants, and every pseudoscientific charlatan they can find. I mean, I don't know who is at fault here. These scamsters who talk through their Uranuses, or stupid podcasters who invite these people to their shows. I don't think any of my regular viewers would want me to say anything to debunk these obnoxious claims. They debunk themselves. But just look at the views that they all get. Verse, just go under the comment section and see how many people actually believe in these senseless remedies and thank the scamsters. There should be a law against such podcasters and pseudoscientific charlatans.
Seriously, podcasters, what are you doing? You only want views, likes, and clicks? It is lazy, irresponsible, and harmful. Please stop turning your mics into megaphones for pseudoscientific nonsense. As for the viewers of this junk, stop encouraging nonsense. Every time you click like, you're telling the world, I am an idiot. Be better than this. Don't give them the eyeballs that they are looking for. Use your common sense. Use that 1.3 kilo jelly inside your head that you say your God has given you. The stars don't control your destiny, but your brain does. Pseudoscience isn't harmless fun. It is a scam that wastes money, spreads ignorance, and distracts from real solutions. Astrology won't fix your career, Numerology won't save your marriage, and Vastu won't magically make you rich. If you don't believe me, check out the videos that I have done on this, where I have debunked all this extensively. But all said and done, this country is riddled with superstitions. Scientific temper is less than a teaspoonful in almost all of the people. So things like these gain a lot of attention, which is why I am desperately asking you guys to support channels like mine who do rational content and try to debunk pseudoscience and try to instill scientific temper in people. I am doing this because I feel this is the need of this hour for this country. If you want this country to develop and you want your children to grow up with a scientific mindset, please stay away from the pseudoscience promoting podcasts. Let us not get fooled.